हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केरो हाल, कैसे हैं दोस्तों? क्या आप लोग काम कर रहे हैं? आज का दिन है 24 फरवरी 2023। आज से ठीक 68 साल पहले दुनिया के सबसे बेहतरीन बेस्ट एंटरप्रेन्योर का जन्म हुआ था, जिनका नाम था स्टीव पॉल जॉब्स। ऐसे बोलें तो आम भाषा में एप्पल का नाम सुना आपने? एप्पल के फाउंडर और एप्पल के डिजाइनर स्टीव जॉब्स। 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के पॉलो अल्टो में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर ही वॉज ए वुड वर्कर और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। बीइंग द सन ऑफ ए वुड बेकर्स एंड वुड वर्कर, he was more curious and he had built the world largest best smartest product. That name is iPad, iPhone, iMac or MacBook, and the best technology associated product will be the global dominated from 2002 to till this date. और जहाँ तक मैं जानता हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में, मैंने उनकी एक बुक पढ़ी है। बुक का नाम है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इन दैट बुक ही हैड इनकोटेड द बेस्ट थिंग विच आई हैड डिस्कवर इन द बुक दैट इज इनकोटेड इन स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ही हैड इनकोटेड अबाउट द गाय or a priest or a monk whose name was Neem Karoli Baba from Himachal Pradesh, that to learn spirituality you should go for that the Indian meditation systems, and he had more emphasize कि हिमाचल प्रदेश में एक बाबा हैं नीम करौली बाबा, जो कि कैंची धाम में रहते हैं। उन्होंने उनका जिक्र किया और ही हैड ऑल्सो शेयर सेम आइडिया विथ द CEO ऑफ मेटा, नाउ इट्स फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, के when he was getting more anxious and investors pressure, then Mark Zuckerberg had take advice from Steve Jobs, and same thing Mr. Steve Jobs had told to Mark Zuckerberg कि आप हिमाचल प्रदेश के कैंची धाम जाओ और नीम करौली बाबा के आप दर्शन करो, शायद आपको ज्ञान मिले और एक बेहतर जिंदगी जीने का और बेहतर मोटिवेशन मिले। फॉलोड बाय दैट, जहाँ तक मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी के परस्पेक्ट से, कि बियॉन्ड द बुक और बियॉन्ड द लेजेसी वाज बीइंग क्रिएटेड बाय मिस्टर स्टीव जॉब्स, कि आज तो वो है नहीं, बट द वे ही हैड बिल्ड द प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड एप्पल इज dominating globally in the terms of technology and the best thing I had realized about that book, Stay Hungry, Stay Foolish, he was more curious and he was a complete design tech guy. And the way he had built the legacy of MacBook and Apple Inc. is a phenomenal. He was a great marketer. He will he will sell the future. And one of the best thing that I had realized कि पूरी दुनिया में ना अमेरिकन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है, और अमेरिकन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर के ना ही वाज द अल्टीमेट सुपरस्टार। He was a legendary guy. The way he will build the product, the way he will make the team, the way he will build the innovative idea and approach to sell each and every aspect from 0 to 1 and vertical integration to horizontal integrations. इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब उन्होंने आई मैक बनाया, उससे पहले उन्होंने बनाया था टच वाला आईफोन। टच वाले आईफोन से पहले उन्होंने बनाया था म्यूजिक आईपॉड, एक छोटा सा डिवाइस जिसमें मेमोरी चिप लगा दो और 5,000 गाने डाल दो, और दैट वाज द रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। और वो हम जींस के जो है ना कॉइन पॉकेट में रख सकते थे और वी कैन ट्रैवल एनीवेयर। एंड द बेस्ट थिंग विच आई हैव रियलाइज अबाउट द मैकबुक, इट इज ए कंप्लीट टेक। आई हैड अर्लियर टेल दैट के मैकबुक और एप्पल का जो लैपटॉप है ना, दैट इज ए कंप्लीट इकोसिस्टम, और उसके थ्रू ना यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिल्ड बिजनेस टू बिल्ड ब्रांड एंड डू डेटा टेक और डू डेटा कोड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू ना, आप सारे चीज कर सकते हैं वेन यू हैव एप्पल मैकबुक। और इट इज ए कंप्लीट टेक यूनिवर्स।
or metaverse. The best thing which I realized as a next phase or next part of entrepreneurial mindset about स्टीव जॉब्स कि जब उन्होंने जो है ना मैकिनटॉश लॉन्च किया था ना, तो विंडोज कंप्यूटर वाज द नेक्स्ट कॉम्पिटिटर. एंड I realized that when Macintosh was being launched, na, Bill Gates was the first investor in Macintosh. तो बिल गेट्स भी यही बात बोलते हैं कि स्टीव जॉब्स वाज द गाय who had made their investor or made their competitor as a great investors. तो मेरे को लगता है ना कि चीज़ों का जो डिजाइन होता है, इनोवेशंस होता है, R&D होता है ना, that we should sell and that we should tell the futuristic approach which will connect to the people at ultimate. In the book of Stay Hungry, Stay Foolish, Steve Jobs have been quoted, entrepreneurs are always an entrepreneurs and they will sell the futures. And he had write one narratives कि entrepreneur बिजनेस में फेल होते हैं ना, लाइफ में फेल नहीं होते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ही हैड टोल्ड हिमसेल्फ कि जब उन्होंने जो है ना मैक का जो म्यूजिक है आईपॉड, जब उसको लॉन्च किया था ना, ही वॉज सो बिग सक्सेसफुल एंड ईच एंड एवरी क्वार्टर इट वॉज ग्रोइंग ऑलमोस्ट 125% to 177%. तो उनके जो को फाउंडर है, द गाय हु वाज कोडिंग इनसाइड्स इन एप्पल, दैट वाज स्टीव वोजनियाक एंड देयर इन्वेस्टर्स. उन्होंने उनके साथ जो है ना एक ग्रुप बना करके जो है ना स्टीव जॉब्स को साइड कर दिया था, मतलब कायदे से निकाल दिया था अपनी मोनोपोली को एक साथ करके. और स्टीव जॉब्स को जब वहाँ से निकाला गया ना, तो मिस्टर स्टीव ज्वाइंस पिक्सर एनिमेशन. आज आप डिज्नी हॉटस्टार, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेटेड ब्रांड है, उसको जानते हैं. पिक्सर एनिमेशन वाज द प्रोडक्ट. आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम एप्पल, स्टीव जॉब्स had built the world largest animation project for his daughter and now sell to Disney. And the best from that point I had observed the learning lessons कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, शायद सोसाइटी को ज़रूरत है या नहीं है, दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स. बट सोसाइटी के लिए जो जरूरी है ना, इफ़ यू आर बिल्डिंग दैट वन ना, डेफिनेटली इट विल बी सक्सेसफुल. एंड द डील ऑफ पिक्सर एनिमेशंस और pixar.com, it was the biggest acquisitions of all time in cinema and entertainment industry. Almost $16 billion of acquisitions, and it was being whole and sold completely designed by Mr. Steve Jobs. After that, the stock price and market valuation will be down in Apple because they had make a huge redundant portfolio of more than 124 products, and the sales and execution was so poor. Stocks will be down. Company have some negative feedbacks. After that, a lots of hard and tussles कि जब कंपनी के साथ गिरने लगे, मार्केट में डाउन होने लगा शेयर रेट, और लोगों में नेगेटिव मीडिया पब्लिसिटी स्टंट होने लगी, तो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स इन एप्पल, दे हैड डिसाइडेड दैट दे विल गो एंड टॉक विथ स्टीव जॉब्स कि सर आप इसको ज्वाइन करें. आफ्टर ज्वाइनिंग एप्पल अगेन to sell the pixar.com to Disney, it was the big hit, or he had cut all 24 products, or make it the list of 10, and they will focus on entertainment wearables, phone, laptop, and MacBook. And now you will see the metaverse of Apple. It's almost the total valuation more than $3.1 trillion. Among they have built a lots of acquisition like Beat. It is a company which will build wearable audio devices, and iPhone is the best revenue source for Apple. Macintosh and MacBooks are the more successful product, and you will feel the
brand and the efficiency of the tech, how tech is being manufactured and how tech is being designed. Na? Once you should travel the local store of I think or iPhone is local store nearby. And the thing which I had realized कि यार सपने तो सब देखते हैं, लेकिन सपनों को देखने का जो जिगरा है ना, वो शायद कंटिन्यूअस जो है ना, हसल एंड टसल से आता है. एंड I'll tell you one thing कि if you want to feel the luxuriness, smartness and tech efficiency, कि आप एक बार ना एप्पल के इमेजिन और आई थिंक स्टोर में जाकर के जो है ना आप एप्पल के प्रोडक्ट को ना यू विल व्यू एंड यू विल रियलाइज द एफिशिएंसी and cutting edge technology and what they have built IoT based devices and what are their earplugs and earbuds. I think as a manifesto or as a company or as a conglomerate, Apple is a complete tech company or which is the global leading tech company and which will decide and which will standardize the mobile phone personifications. To be honest, I'm too much impressed with the persona what Mr. Steve Jobs had built, and now same legacy is being carried by Mr. Tim Cook. यार जब टिम कुक एप्पल को ज्वाइन किया ना, इट वाज ऑलमोस्ट $350 billion market and now it is $3.1 trillion. It's almost 10 times better than the previous ones. Due to the health and improper health issue, Mr. Steve Jobs was being got diagnosed with pancreatic cancer and he was no more. But the way he had built the entrepreneurial legacy to the young entrepreneur. Today is his birth anniversary, and the best amazing thing which I want to like to share with you कि भाई इंडिया में भी एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गया है जो कि कर्नाटका में है. कर्नाटका के बैंगलोर हाईवे से 70 किलोमीटर दूर आपको तमिलनाडु के होसूर रोड पे मिल जाएगा. और वेरी सुन हम इंडिया में टेक को रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं और एप्पल विल प्ले मोर सिग्निफिकेंट रोल because Make in India and Made in India initiatives will be more successful, followed by a growth in India. So, what do you think about your own view and what you had learned from Mr. Steve Jobs? What is your learning manifesto? Please share. And with that note, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, stay hungry, stay foolish. Because the way you will learn more, you will build the more potential and PM of the product will be more efficient. One more thing I would like to tell about Steve Jobs, that he was the guy who had taught the entrepreneurial chapter completely, directly and potentially. With that note, stay hungry, stay foolish. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.